Hello friends, I am Manoj Kumar Behra, subject expert from MKD Education. I do welcome you to this digital platform of Diploma Education. Here you can find class notes, video classes, previous year question answer solved and very similar test from this digital platform by browsing www.mkdeducation.com. So today I will be discussing heat and thermodynamics, a chapter name from your engineering physics subject. So directly coming to the point, we will discuss heat and thermodynamics. So our chapter name is heat and thermodynamics. Heat. What is heat? You people mostly know, you have a concept that you know heat. Actually heat टा कौन? What is heat? जोटा को हमें लेमैन हमें जानी चु जे हमें जोटा heat बोली भाबू चु actually that is not heat. हमें temperature टा को हमें कौन बोली heat बोली भाबू चु actually सेया नुहो. हीट टा को हमें टच करके हमें जानी परिबुनी जोटा को हमें टच करके जानू छु ठंडा लगला दैट इज टेम्परेचर गरम लगला दैट इज टेम्परेचर दैट इज नॉट हीट हीट इज समथिंग लाइक वर्क जेमिति हमें वर्क टा को हमें फील कर परिबुनी बट वी कैन सी वर्क इज बीइंग डन हियर माने काम होउची बोली कि किछि काम करा जाउची बोली कि हम जानि पारुछु किंतु से कामटा को हम छुई परिबुनी फील कर परिबुनी. So this is a phenomena, this is a parameter which comes in the form of energy. So in a total or in a gist we can say heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Mind रे हमें रखिबा दरकार जे heat is a form of energy. Which kind of energy? Heat is a form of energy that is transient energy. Transient. ये word को हमें मन रखिबा उचित. Transient means which can transit, which can move, which can transfer from one physical body to another physical body. गोटे physical body रू आ गोटे physical body को जब से transit ही परथिबो, transfer ही परथिबो, transmit ही परथिबो से एनर्जी को हमें कौन कहबू ट्रांजिएंट एनर्जी एंड दैट ट्रांजिएंट एनर्जी इज नोन एज हीट. ताहले गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को केमिति से ट्रांसमिट होची केते बळे हे परबो हमें जानि छु एनीथिंग व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस किछि ऊंचा नीचा रहिले बेसी कम रहिले फ्लो हुए गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को फ्लो हुए. Similarly, heat transmits from a higher body temperature to a lower body temperature. गोटे बॉडी रो हाई टेम्परेचर जदि थिबो से टेम्परेचर टा गोटे लो बॉडी टेम्परेचर को से ट्रांसमिट होबो सेटा होची हीट रो प्रॉपर्टी. सो ए भले हम आज केतटा सालिएंट फीचर्स ऑफ हीट किसे प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट हमें डिस्कस करिवो वन बाय वन. कौन अच्छी फर्स्ट तो हीट हमें जानी गलु हीट इज ए ट्रांजिएंट एनर्जी इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसमिट्स. सो salient features, let me tell you some salient features of heat. Salient features means some remarkable features किछटा भलो कथा about heat. Salient features of heat कौन salient features of heat कौन first point is heat flows from higher temperature body to lower temperature body. It's very common. एथर किछ नाही सब जिंस हायर रो लोअर को फ्लो हुए तो हीट भी से बोलिया high temperature body ru low temperature body को flow हुए. Second is the weight remains constant
माने वेट रिमेन्स कांस्टेंट माने जते बड़े हीट टा हाई टेम्परेचर रु लो टेम्परेचर को फ्लो होतबो वेट रे किछि जाय से नाही छोट बॉडी जदी अधिक हीट थिबो ताले अधिक टेम्परेचर हबो तो सेटा छोट बॉडी रे हुए बड़ बॉडी टा जदी लो टेम्परेचर थिबो तो गोटे छोट बॉडी हाई टेम्परेचर जदी थिबो से गोटे बड़ बॉडी कम टेम्परेचर को भी से हीट टा फ्लो होई परिबो नथिंग टू डू विथ वेट थर्ड इज everybody expands now see everybody expands मोटा मार्क कली everybody expands when heat is given or supplied to it एटा हमें जानि छु जे जेकोनसी बॉडी को हम हीट देला माने से कोन हुए एक्सपांड हुए तार वॉल्यूम शेप साइज टिके बढ़े गोटे एक्सेप्शन एटी अछि हायर क्लास मान के तमे जतले जीवो सेतले जानिबो एक्सेप्शन इज वाटर केस रे सेटा एग्जैक्टली हुए नि एक्सेप्शन होची वाटर ए केस रे टिके चेंज हुए सेटा तमे हायर सेमेस्टर रे पढिले हायर स्टडी करले जानि परिबो बट एक्सेप्ट वाटर everybody expands when heat is supplied to it or when it is heated so these are the salient points of heat जे heat रो एति करामते जाको हम जहा कहबा जे heat रो एति सब salient point थाए ठीक अछि हमें heat विषय जानि गलु एबे heat रे यूनिट पढिबु what are the units of heat एग्जाम रे most of the time you are being asked to write the unit of heat okay units okay by the time let me tell you temperature हम टेम्परेचर विषय में टिके कहि देबा temperature see so we can say heat is something or heat is a form of transient energy which makes us which gives us a sensation of हॉटनेस और कोल्डनेस हमको से गोटे सेंसेशन हीट कोने हम गोटे बॉडी को टच करले हम टच करले हम जानि ओ बहुत गरम अछि से जो सेंसेशन ता देला जो सेंस ता हमें पाइलु से बॉडी थारु हमें कोन जानलु जे बॉडी ता बहुत गरम अछि माने बॉडी रो टेंपरेचर को हम जानलु बहुत गरम अछि ता सहित हमें भी प्रिज्यूम कर दोछ कोन से बॉडी भितरे बहुत हीट एनर्जी अछि सेथि पय से बॉडी ता गरम अछि so heat is a transient energy which gives us a sensation of hotness or coldness जदी आइस एटा आइस ही थांता हमें टच कला को हमको ठंडा लागंता ता माने आइस रे भी हीट अछि बट दैट हीट इज नेगेटिव हीट जेतले टेंपरेचर गरम थाए कि हाई टेंपरेचर हेले दैट इज पॉजिटिव हीट इफ इट इज कोल्ड हमें ताको नेगेटिव हीट रे कंसीडर करू किंतु तम मानक पई तमे खाली एति जानथा heat is the representation of temperature okay so temperature means in a nutshell हमें कोन कहि परिबु temperature is a feeling of coldness it is degree of feeling of coldness or hotness it's a measure degree of feeling of hotness or coldness this is the only definition of temperature definition है हमें कितने मात्रा रे hot की cold को हमें feel करते degree of feeling of hotness and coldness okay so by the time we got to know temperature and heat तारा हमें both heat और temperature हमें units को discuss करें okay let me tell you system of unit this is for heat this is for temperature fps system रे fps system means foot pound second से केस रे कोन होबो हीट रे यूनिट कोन हिजबो b.tu ब्रिटिश थर्मल यूनिट British thermal unit
अच्छा fps सेकेंड रे टेम्परेचर यूनिट कोन डिग्री फारेनहीट. Now come to cgs unit सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. जेमिति फुट पाउंड सेकेंड सेमिति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. एठी कोन होची कैलोरी. कैलोरी ओके और सिंपली ताको सी लिखिले भी हबो. कैलोरी एठी कोन होची टेम्परेचर सेमिति ओके. नाउ m k s unit kc किलो कैलोरी. एठी सेमिति mks यूनिट रे सेठी भी कोन हेउची also c centigrade degree. Always remember whenever you write f or c you have to write degree centigrade बोले लिखियो. जदि खाली हम c लिखिबो that will represent calorie. mark the difference. खाली c लिखिले सेटा कैलोरी हम बोली जानिबो. डिग्री सेंटीग्रेड लिखिले सेटा हम टेम्परेचर. खाली c लिखिले सेटा हीट हिजबो. डिग्री सेंटीग्रेड हमको लिखिया पाए पड़िबो टेम्परेचर पाए. ओके नेक्स्ट इज SI international system of unit. Here this is heat is expressed in terms of unit kilojoule and here this is degree Kelvin. So these are all the system of units of heat and temperature. Okay, now we will discuss another more important aspects of heat, that is specific heat. Now see specific heat. Here let me tell you a very tricky hint. Whenever you find specific, you assume that a quantity divided per mass or divided per unit mass. जेकोसी पैरामीटर रे जदि हम मास रे डिवाइड कर दउ सेटा स्पेसिफिक हे जाय. सो हियर स्पेसिफिक हीट मींस हीट डिवाइडेड बाय ए यूनिट मास. ओटे यूनिट मास रे डिवाइड हेच बोली तक स्पेसिफिक हीट कहल अछि. ओके लेट मी टेल यू द कांसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट. हमरो गोटे बॉडी को हीट करिया पई कि गोटे बॉडी को तार टेम्परेचर बढ़िया पई that depends on amount of heat is required. गोटे छोटो मास रो बॉडी को हमें जति की हीट देले तार टेम्परेचर बढ़िबो. बडो मास रो बॉडी को टे अधिक टेम्परेचर अधिक हीट दरकार. So a greater amount of heat is required to raise the temperature of that body. A greater amount of heat is required for raise the temperature of body for a greater mass. That means heat टा डिपेंड पर कहा परे मास ऊपर. छोटो बॉडी को हीट करिया पई गोटे सपोज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़िया पई छोटो मास रो बॉडी पई जति की हीट दरकार. बड़ो मास रो बॉडी रे भी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पई बड़ो हीट दरकार. दैट मींस हीट इज प्रोपोर्शनल टू mass. Similarly, for greater temperature difference, high heat is also required. जदि हमें गोटे टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस हम क्रिएट करिवु, हम 5 डिग्री बढ़ाया पय पड़िबो ताले हीट अधिक दरकार. हम 10 डिग्री बढ़ाया पय पड़िबो हीट अधिक दरकार. दैट मींस heat is proportional to mass or heat depends on mass and heat is proportional to temperature difference. If we combine both these equations 1 and 2, we will be having Q proportional to M del T. Now see, let me tell you, Q stands for heat, M stands for mass and del T stands for temperature difference. Here
Q equals to C m del T implies that C here, C is a constant of proportionality, that is C is equal to Q by m del T. C, let me tell you, Q stands for heat, m mass of the body, del T is the temperature difference, and C is the specific heat. This is C is specific heat. Now from this relation, this is the mathematical relation or mathematical expression of specific heat. So specific heat depends upon heat, mass and temperature difference. Now see, let me tell you the definition of specific heat. From this relation we can see, let me define. The specific heat is defined as the amount of heat required to raise the temperature of certain mass of a body through 1 degree centigrade. गोटे डिग्री सेंटीग्रेड की गोटे डिग्री फारेनहाइट की गोटे डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया पाई गोटे यूनिट मास बॉडी रो केते अमाउंट ऑफ हीट दरकार पड़ची. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of a certain mass of a body or a unit mass of a body through 1 degree centigrade. It is of two types. Specific heat is of two types. One is specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. Specific heat at constant pressure denoted by Cp, and another one is specific heat at constant volume denoted by Cv. Now let me tell you, ମୁଁ कौन कहिथिली जे temperature required or heat required to raise the temperature of a unit mass of substance through 1 degree centigrade. आमे एठु कोन जानलु जे केते अमाउंट रो 1 यूनिट और ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को गोटे डिग्री टेम्परेचर राइज पाई जेते की हीट दरकार, दैट इज स्पेसिफिक हीट. जति सही हीटिंग टा कांस्टेंट प्रेशर रही थाए, दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. आ जति गोटे बॉडी को आमे तार 1 गोटे यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पाई ताकू जदि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम रे हीट करिथिबु, दैट स्पेसिफिक हीट विल बी नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Okay, so these are the two different types of specific heats. Let me tell you the unit of specific heat. Unit of specific heat, that is SI unit, kilojoule per kg degree Kelvin. What do you mean by that? That means for 1 kg of substance, if you want to raise the temperature through 1 degree centigrade, 1 kilojoule of heat is required. ता माने ए रिलेशन रा में कोन जाने बाटे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट. मूलर कहितली जे स्पेसिफिक हीट ता कोन यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 degree temperature रे हमें बढ़ेबा जेते के हीट दरकार, दैट इज स्पेसिफिक हीट. So here from this relation we can find out for 1 kg of substance, if you want to raise the temperature through 1 degree Kelvin, you need 1 kilojoule of heat. So this is all about specific heat. Now come to latent heat. Latent heat कौन? सेटा भी heat रो गोटे form. So we are now discussing latent heat. Latent heat. Now see, latent heat is related to another term, that is change of state or change of phase.
change of state or change of phase. That means changing of its physical structure from another physical structure. Three phases generally we know exist, that is solid, liquid and gaseous phase. See केमती change of state केमती होची, change of phase केमती होची. Solid under certain condition of temperature and pressure combination रे आमे किछि combination रे हम कोन solid को convert करि परिबु liquid को. Solid will be converted into liquid. जत्ते बेले solid under the condition of temperature and pressure converts into liquid, से केस रे आमे सेटा को हम कोन कहूछु fusion. Fusion means conversion of solid state to liquid state. केमिति होची under some condition of temperature और pressure. Temperature pressure को हमें combine करके किछि condition रे हमें fusion हे होची. Now liquid also converted into gas. Under some condition of temperature and pressure, liquid तो gas को convert होची, से केस रे हमें कोन कहूछु vaporization. Clear? Now see what happens. आमे कोन करिवु solid को directly भी हमें gas को convert कर परिवु. Solid directly converted into gas. से प्रोसेस को हमें कोन कहिवु, that is sublimation. Example मोर जो गंध कर्पूर सॉलिड, गंध कर्पूर सॉलिड हम ओडिया जाको गंध कर्पूर हम देखु गंध कर्पूर डायरेक्ट से लिक्विड हुएनी, सेथरे निया लगेले से सॉलिड रु डायरेक्ट गैस हे जाय, से लिक्विड हुएनी. तो सेठी कोन होची, सी प्रोसेस को हम कोन कहबु सब्लिमेशन. सिमिलरली जत्ते बेले उल्टा काम करिवु, जत्ते बेले गैस टा लिक्विड हबो, से प्रोसेस को हम कोन कहबु लिक्विफिकेशन. And when liquid gets converted into solid, that process is known as solidification. जतले वाटर टा हमर कोन हे जाय आइस हे जाय, सेटा solidification process रे हुए. Now see, so we have discussed how phase changes from one physical state to another physical state. सेटा कोन होची latent heat सहित केमिति related, let me tell you. Before going into deep, now see what latent heat is actually. Now see, latent means hidden, जोटे के लुचि हे थाए. We know everybody expands when heating or heat is added, and everybody contracts when heat is rejected or when it is cooled. हम heat देले body expand हुए, heat नहीं आसले एटा कोन हे squeeze हे जाय, ताको heat rejection. ताले कोन होची गोटे अछि you keep on heating, तुमे heat बढ़े जाओ, you keep on heating, सेठी कोन हबो टेम्परेचर बढ़ी चलिबो, टेम्परेचर इंक्रीज हबो, तापर से कोन हे जिवो गोटे फेज रु फाइनली कोन हे जिवो फेज चेंज हबो. गोटे टाइम आसीबो जो टाइम रे तमे कोन हबो हमें हीट बढ़ौतबो, टेम्परेचर भी बढ़ौतबो, से टाइम रे कोन हबो फेज चेंज हबो किंतु टेम्परेचर बढ़िबो नाही. गोटे टाइम रे कोन होची हमें हीट ऐड करलु माने हीट देलु माने तार टेम्परेचर टा बढ़िबो डेफिनेटली. गोटे टाइम आसीबो तमे हीट दोथिबो, टेम्परेचर बढ़ु नथिबो किंतु फेज चेंज हबो. तो जो टाइम रे हम जानिछु हीट देला माने टेम्परेचर इंक्रीज हबो, हीट ऐड टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट ऐड टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट रिजेक्ट टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो हीट कलु माने टेम्परेचर बढ़िबाटा
सुनिश्चित गोटे टाइम आसीबो जो टाइम रे कि आमे हीट दोथबु टेम्परेचर किंतु इंक्रीज होबोनी जस्ट गोटे फेज रु आ गोटे फेज ता चेंज हे जिवो सॉलिड ता लिक्विड हे जिवो हीट दोथबु टेम्परेचर बढ़िबोनी सॉलिड ता लिक्विड हे जिवो तो सेठी आमे हीट देला बेलकु टेम्परेचर बढ़ुनी से टेम्परेचर तार जाउची कोन से हीट कुआडे जाउची दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट माने जो हीट ता आमे हीटिंग करूचु टेम्परेचर बढ़ु नाही फेज चेंज हे जाउची से हीट ता हम कोन कहूची हिडन हीट और latent heat this is known as latent heat so let me define latent heat is defined as the amount of heat which is required to change just listen me carefully the amount of heat required which is needed to change the phase of a substance without increasing the temperature माने टेम्परेचर इंक्रीज होबो नाही बट फेज चेंज हे जिवो सेही हीट टा हम जहा दोथबु सेते बेले दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट so this latent heat is of two types latent heat of fusion and latent heat of vaporization latent heat of fusion another one is latent heat of vaporization see already I have told you केतबेले फ्यूजन होची फ्यूजन केतबेले होची जेतबेले सॉलिड टा लिक्विड होची तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ताल केतबेले हबो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन केतबेले हबो जेतबेले आमे सॉलिड को हीट दोथबु सॉलिड को हीट दोथबु आ सीए कोन होतबो लिक्विड होथिबो आ हीट किंतु नो increase in temperature latent heat solid को हमें heat दोथिबु होबा कथा कोन heat देलु माने टेम्परेचर इंक्रीज होबा कथा किंतु हमें सॉलिड को हीट दबु टेम्परेचर इंक्रीज हो नथिबो किंतु से सॉलिड टा लिक्विड हे थो दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हीट टा से दोथिबो हमें टेम्परेचर इंक्रीज हो नथिबो लिक्विड हे थो दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिमिलरली लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कोन केते बळ हबो जे लिक्विड को तमे हीट दबो लिक्विड को हीट दबो सी कोन हबो नो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हबोनी बट दैट विल बिकम gas that means you add heat you supply heat to liquid tendency at that time is to increase the temperature but in temperature will not increase rather what will happen liquid becomes gas से टाइम रे जो हीट हमें देथिबो that will be termed as latent heat of vaporization so latent heat is of two types latent heat of fusion and latent heat of vaporization okay let me tell you the unit of latent heat latent heat of unit is let me tell you in SI unit that is kilojoule per kg unit is kilojoule per kg that means amount of heat required in kilojoule to change the phase of the substance for 1 kg गोटे kg सब्सटेंस को सॉलिड हो कि लिक्विड हो गोटे केजी सब्सटेंस को तार फेज चेंज करिया पई जेतिकी किलो जूल और जेतिकी अमाउंट ऑफ हीट दरकार दैट इज नोन एज लैटेंट हीट जस्ट फेज चेंज हो सो दिस इज द यूनिट ऑफ आवर यूनिट ऑफ लैटेंट हीट and the dimension is m square l to the power minus 2 t to the power minus 2 that is the dimension is not required okay you just remember the kilojoule per kg SI unit of latent heat is kilojoule per kg okay next come to one more aspect of our heat and thermodynamics thermal
expansion of liquid, we must know the concept. Thermal expansion of liquid, that means how a liquid gets expanded when it is heated. Liquid को हमें heat देले से केमिति expand होची. Very common thing. Liquid रो निजस्व shape न थाए. Liquid रो निजस्व shape size किछ न थाए. A liquid acquires the shape and size of its container. जो container रे liquid टा थाए से container रो shape and size टा को acquire करने थाए. तो जेते बेला हमें liquid को heat दबु, whenever you give or supply heat to a liquid, its volume increases. तार volume टा बढ़ी जीवो. केमिति बढ़ीबो? According to its container. से container जो container रे थिबो से container रो volume हिसाब रे से liquid रो volume टा से shape टा नै जीवो. So here thermal expansion of liquid means expansion of liquid according to the volume of its container. Its container. अब इथरे किछि नाही. So thermal expansion of liquid is this much, that is expansion of liquid happens according to the volume its container. तार volume container shape size जे बडा थिबो ऑटोमेटिकली हमें लिक्विड को हीट देले लिक्विड सेही बडा सेही शेप रे से कोन होची तार एक्सपेंशन होची. ओके, here we can, this kind of expansion in case of liquid is termed as cubical expansion. Generally cubical expansion, we will discuss it later on. Cubical expansion ताको कहा जाए. Thermal expansion in case of liquid हम ताको कोन को cubical expansion. Okay, now come to thermal expansion of solid. Thermal expansion of solid. Likewise, thermal expansion of liquid, thermal expansion of solid is also there. Now see, why it is termed as a thermal expansion? Because expansion occurs when heat is added to it or heat is supplied to that body. जे कौन सी बॉडी को हमें हीट सप्लाई करले हीट देले तार नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स अछि सब बॉडी रो से कोन हुए तार एक्सपेंशन हुए. Therefore it is termed as thermal expansion. That means heat is added or expansion happens due to heat addition. Heat addition means thermal addition or temperature addition. Now see, thermal expansion of solid. Before going to thermal expansion of solid, let me tell you how many types of solids are there. One dimensional solid, two dimensional solid and three dimensional solid. कौन one dimensional solid कौन? One dimensional solid होची जो solid रो तीनटा डायमेंशन नथिबो केवल गोटे डायमेंशन. That means length. Suppose this is our bicycle spoke. Bicycle रो जो हमर गोटे सरू मेटालिक रॉड गोटे जहार कि हमें डायमीटर टाकू कि ब्रेड्थ और विड्थ टाकू वेरी नेग्लिजिबल भाबिबा खाली लेंथ थिबो. One dimensional solid means solid having only one dimension, that is say length, खाली length से थिबो, that is one dimensional solid. Now come to two dimensional solid. Two dimensional solid कोटा? Suppose कोटे page of paper, one page of paper that is having two dimension, yes or no? तार कोटे page रे दी dimension अछि. गोटे होची length, another one is breadth. तो सेट में आर दीटा डायमेंशन अछि. तो two dimensional solids are having two dimensions. One is length and second one is breadth. Then what about three dimensional solid? जो solid रो तीनटा डायमेंशन थिबो, like our book कि
see, this is a three dimensional solid. It will be having length अछि, ये कौन हाइट अछि, ये होची तार ब्रेथ, माने ए ऑब्जेक्ट रे, ए सॉलिड ऑब्जेक्ट रे तीनटा तार डायमेंशन अछि, लेंथ अछि, हाइट अछि, ब्रेथ भी अछि, हाइट और विड्थ। ताहले एथरे कोन अछि लेंथ, height and breadth. So this is three dimensional solid. ମୁଁ କାहे के सब डिस्कशन करूची? Our objective is to find out thermal expansion of solid. तो one dimensional solid ପାଇଁ thermal expansion केमिति हेबो? जहार केवल लेंथ थिबो। two dimensional solid ପାଇଁ तार thermal expansion केमिति हेबो? जहार खाली लेंथ आउ ब्रेडथ थिबो। And three dimensional solid ପାଇଁ तार thermal expansion केमिति हेबो? जहार तीनटा जाक थिबो, लेंथ, हाइट एंड ब्रेडथ। Different dimensional solids have different kind of thermal expansion. Different kind of thermal expansion. For one dimensional solid, the thermal expansion is termed as linear expansion. Is termed as linear expansion. And for two-dimensional solid, the thermal expansion is known as aerial. Why aerial? आर गोटे एरिया अछि, सेत पर ताकू एरिया रु aerial expansion. Aerial expansion, or it is also termed as superficial expansion. And for three-dimensional solid, you know, three-dimensional solid is having a volume. That means in case of three-dimensional solid, the volume increases. In case of two-dimensional solid, the area increases. Therefore, aerial expansion. For one-dimensional solid, the length increases. That is linear expansion. For three-dimensional solid, once again I am telling, volume increases. Therefore, it is termed as volume expansion or cubical expansion, or it is also termed as cubical expansion. Okay.